हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा मेकअप करूँगी एंड आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ये, दिस इज़ मॉइस्चराइज़र। और आप इसको थोड़ा इतना अमाउंट लेके आप इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाएं। इससे आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखेगा और आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहेगी। तो आप इसे अच्छे से लगाएं। नेक्स्ट हम लगाएंगे प्राइमर। ये प्राइमर है नायका का और आप इसको थोड़ा सा लेंगे इतना एंड आप इसको अपने पूरे फेस पे लगाएंगे ऐसे। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। ये वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन है, फॉन्डी10 ऑटो फोकस। और मेरा इसमें जो शेड है वो है डेजर्ट बीच। या लेट्स स्टार्ट। इसको आपको अच्छे अमाउंट में लेना है, लाइक दिस, पूरा ऐसे ऐसे। तो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है बात आप लोगों से बात करते हुए, तो प्लीज़ इग्नोर। दिस इज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम नायका। तो अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से आप इसको टैप टैप करके ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा कि फाउंडेशन आपकी लाइक स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से और वो बिल्कुल ऊपर सा ना लगे। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब आपको कंसीलर लगाना है। दिस इज़ अ कंसीलर। ये मेकअप रेवोल्यूशन का है, कंसील एंड डिफाइन, एंड दिस इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छा है ये, आई मस्ट से। इसको ऐसे जहाँ जहाँ आपको डार्क लग रहा है वहाँ आपको ऐसे ऐसे करके लगाना है और इसे अच्छे से आराम से ब्लेंड करना है। ओके। मैं इसे थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड करके आती हूँ। So this is a setting powder from Rimmel London, Stay Matte Powder, and ये मैं अभी लेकर आ रही थी, वो टूट गया, मतलब मेरे हाथ से गिर के टूट गया। आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अच्छे से अप्लाई करिए इसे। So after that, I'm not using the contour cream, I'm using this powder from Wet n Wild, and this is amazing. मतलब आपको कॉन्टूर वाली फील दे देता है। वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में करती हूँ मैं, बट अभी मैं नहीं कर रही। अभी मैं इसको ऐसे, आपको इसको ऊपर की साइड ऐसे करना है जिससे
आपके फेस को स्ट्रक्चर मिलेगा, लाइक दिस। अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ। अगर अपना थोड़ा फॉरहेड बड़ा लगता है तो मैं ये थोड़ा सा कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। नोज़ कॉन्टूर कर सकते हैं ऐसे करके, दिस इज़ like this. After that, this is a blush. So ये मेरा फेवरेट ब्लश है कलर बार का। ये मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इसको लगाऊंगी like this. आपको इसे चीक्स पे लगाना है ऐसे। I'm using this for my eyebrows. This is LA Colors Tinted Brow Gel. So let's start. Like this you have to do. You can see the difference. You guys clearly see the difference before and after using this. This is actually a nice product. So let's start the eye makeup with this palette. This is Makeup Revolution Ultra Eyeshadow Palette. Yeah, so let's start. Light shade use करूँगी. Oh, I'm using this shade. After that, I'm using the darker shade. This is the darker one. Blend it properly. Blend it with some concealer to crease. So guys, I'm applying this shade like this. राइट, उसके ऊपर मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ. So guys, I'm applying more darker shade to my corner like this. Like this. This gel kajal on my eyes.
Now applying this eyelashes like this. Now applying this mascara from Maybelline. I think आप सब लोगों के पास होगा ये. तो ये मैं नीचे लगा रही हूँ, नीचे वाले आईज के. I'm using this nude pencil from Rimmel London and इसे मैं अपने यहाँ लगाऊंगी. Using this eyeshadow, यहाँ पे this is highlighter and ये मेरा favorite highlighter है. यहाँ लगाना है. See the glow. This is amazing. Lipstick from Nykaa. This is Makeup Fixer Natural. ये Swiss Beauty का है. ये आपके मेकअप को लॉन्गेस्ट स्टे करेगा. हेलो एवरीवन, तो ये पूरा लुक मैंने अभी तैयार किया है आप लोगों के साथ. तो आपने देखा और प्लीज़ आप मुझे बताएं आपको और क्या देखना है और मैं आप लोगों के लिए और क्या क्या न्यू वीडियोस लेकर आ सकती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. बाय.